أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is class 7th, subject English, high school Pasipora. Today is 7th of July 2020. This is the third part of our lecture. Just 3 questions. First, I will read some lines and then I will try to explain you. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept throughout the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who was the bearded man lying on the bed. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. "I don't know you and have nothing to forgive you for," said the king. "You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wanted me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same for me." The man felt better. The wounded man who came there when the hermit and the king were digging the earth. When he reached there, he fell down and fainted. The man felt bad, asked for something. یہ جو آدمی تھا اس کو بادشاہ اور اس درویش نے اچھی طرح سے اس کی خاطر تواضع کی، اس کی مطلب وہ ڈریسنگ کی، اس کا جو زخم تھا اس پہ ڈریسنگ کی. The man felt better. اب یہ تھوڑا ٹھیک، گڈ، بیٹر، بیسٹ degrees of comparison. The man felt better and asked for something to drink. اب وہ کچھ اشارہ کر رہا تھا کھانے کے لیے. The king brought fresh water and gave it to him. بادشاہ نے کیا کیا؟ He brought, bring, brought, first form, second form verb کی ہے, third form brought, and gave it to him. اور اس کو دے دیا. Give, gave, given, first, second, third verb کی form. By this time the sun had set. اب بہت دیر ہو چکی تھی. اب یہ دن جو تھا یہ ڈل رہا تھا، آفتاب جو تھا غروب ہو رہا تھا. And the air was cool. اب یہ جو موسم تھا یہ جو بالکل ٹھنڈی لگ رہی تھی، cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. کیونکہ یہ آدمی جو تھا he was wounded. They carried him. ان دونوں نے اس کو اٹھا لیا and laid him on the bed. اور اس کو ایک بسترے پہ ڈالا. The man closed his eyes and lay quiet. اس کو گہری نیند پڑ گئی، اس نے آنکھیں بند کی اور نیند پڑ گئی اس کی.
lay quiet, बिल्कुल खामोश बेचारा नींद में था. The king tired by his walk, क्योंकि आप जानते हैं ये जो बादशाह था बहुत दूर से आया था, लेकिन पैदल आया था, ये बहुत थका हुआ था, और उसने क्या किया और काम भी किया इस हर्मिट के साथ, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, थका मांदा था. lay down on the floor, वो भी नीचे बैठ गया. फ्लोर यहाँ पर है FLOR, फ्लोर फर्श. दूसरा फ्लोर हुआ आटा, FLOUR, फ्लोर. on the floor and slept through the night, और इसको भी नींद पड़ गई क्योंकि थका मादा था. when he awoke, जब वो बेदार हो गया, when the king awoke, it was several minutes before he could remember where he was. उसको चंद मिनटों के बाद ये अंदाजा हुआ कि मैं कहां पर हूं, मैं इस वक्त कहां पर हूं, और who the strange bearded man lying on the bed was, और ये जो इसके पास में पड़ा हुआ बेड पे आदमी जो है ये कौन है. bearded man जो है, ये जो wounded man है, ये कौन है, इसको मतलब अब पता चला. forgive me, said the bearded man in a weak voice. ये जो bearded man था, ये जो जख्मी आदमी था, ये कमजोर आवाज में क्या है इस बादशाह से, इस आदमी से, forgive me, मुझे माफ कीजिए. when he saw that king was awake, जब उसने देखा ये जो बादशाह है ये नींद से बेदार हो गया. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. बात ने कहा मैं आपको किस तरह से माफ कर सकता हूँ, आपने मुझे क्या किया मुझे नहीं पता है. You don't know me but I know you. इस bearded man ने कहा, इस जख्मी आदमी ने कहा You don't know me, आप मुझे नहीं जानते हो, but I know. I am that enemy of yours, मैं वो आपका दुश्मन हूँ जिसने ये अपनी जगह पे ये टाई किया था. Who swore revenge on you, जो आपको बदला लेने का, जिसने मैंने आपको आपके ऊपर बदला लेने का कसम खाया था. क्यों? Because you put my brother to death, आपने मेरे भाई का कत्ल किया है. बादशाह से कह रहा है, इस आदमी से कह रहा है. अभी उनको इनकी वो पहले पहचान नहीं था, अब इसने इसको पहचान लिया. ये जो बादशाह है इसने इसके भाई का कत्ल किया था. एंड सीज्ड माय प्रॉपर्टी, वो क्या किया था, ये जो मेरी जायदाद थी वो आपने छीन ली थी, मुझसे स्नैच की थी. आई न्यू यू एंड यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट, मुझे पता चला कि आप हरमिट के पास जा रहे हैं. So I left my and I made up my mind to kill you on your way home. मैंने अब अपने जहन को तैयार रखा था, make my mind बिल्कुल तैयार हो गया कि मैं आपको रास्ते में कत्ल करूंगा जब आप वहां से वापस आएंगे. But the day passed, लेकिन मैं दिन भर वहां एक हाइडिंग प्लेस में रहा, मैं एक छुपी हुई जगह पे आपको मारने के लिए वहां बैठा हुआ था. I left my hiding place and came upon your bodyguard. जब मुझे अब अंदाजा हुआ कि आप वापस नहीं आएंगे तो मैं उस हाइडिंग प्लेस से बाहर निकला. हाइड गो गुब्रियो पन छुपरावन दबा मैं तक नेबर नेरुन किम इम जाय. But I came up your bodyguard who recognized me. जब मैं वहां से निकला तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, उसने मुझे पहचान लिया. एंड वांटेड मी, और उसने मुझे जख्मी किया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहां से भाग निकला. बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माय वॉन्ड्स, मैं मर चुका होता अगर आपने मेरे ये जो वॉन्ड्स थे इनके ऊपर मरहम पट्टी नहीं की होगी, मुझे इधर नहीं बैठाया होगा, मैं जरूर मर जाता. ये लंबी थोड़ी कहानी है, इसमें मेरे ख्याल में और एक लेक्चर देना पड़ेगा. यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिखे. सो रिवेंज, बदला लेने का कसम. किसने लिया इसके ऊपर ये बदला लेने का कसम? इस बियर्डेड मैन ने, क्योंकि बादशाह ने इसकी प्रॉपर्टी सीज की थी और इसके भाई का कत्ल किया था. बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला. अच्छा, फ्लोर फर्श. स्ट्रेंज, अजनबी.
اسٹرینج اجنبی. اس وقت یہ جو بادشاہ اور یہ حکیم ہم کہیں گے, فقیر ہم کہیں گے, درویش کہیں گے, کیا کہیں گے, یہ دونوں انہوں نے اس اسٹرینج آدمی کی مرہم پٹی کی. یہاں پر ایک ہے انمی, دشمن, سیز چھین لینا, ٹو سنیچ, ریکوگنائز پہچان. یہاں پر فلور, فلور ایک فلور ہوا آٹا, دوسرا ہوا فرش, ایف ایل او آر, فلور فرش. پیس, پی ای اے سی, پیس امن. پیس ہے دوسرا, پی آئی ای سی, پیس ٹکڑا. اچھا یہاں پر میں نے وہ کچھ شارٹ کوشچنز لکھے ہیں. Who was bearded man? Who was bearded? He was the king's enemy. He was the king's enemy. دوسرا ہے who seized his property. جو bearded man تھا اس کی property کس نے seize کی؟ The king seized his property and also killed his brother. Who escaped from the bodyguard? وہاں سے کون بچ نکلا؟ The enemy. Or the enemy escaped from the bodyguard. Who dressed the wounded man? اس کی مرہم پٹی کس نے کی؟ The king dressed the wounded man. I hope it is enough today.